जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते बीपी गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। So welcome everyone to our 6th class of the Bhagavad Gita. We have finished chapter 1 and we've started chapter 2. I have had a couple of enquiries after our last class when I did chapter 2 verse 1, 2 and 3, where people had difficulty in understanding verse 2 and its explanation because it's a little lengthy. So I have decided to redo that. Actually, that is also the right way because chapter 2 is the contents of the Gita summarized. In short, it's a summary of the entire 18 chapters. So it's best that we understand it well and we take time. There is no need to rush through it. So I'm glad that those who asked me did ask me those queries so that I got an idea of how the rest of you must be feeling. And those who weren't there, it's a good time for them to catch up. So, Monica, would you like to read chapter 2, verse 1? Yes, sure. Okay, please do. तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्. Translation. Sanjay said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words. Okay, so we have seen up till now that Arjun very enthusiastically came to the battlefield to fight. He had all intention to fight. घर से तैयार होकर आया था. He knew exactly battlefield पे कौन एकत्रित हुए हैं, किन के साथ वो लड़ने वाला है. वो पूरे जोश से वहां पर पहुंचा था. शंख बजाया गया. देवदत्त अर्जुन का शंख था और पंचजन्य कृष्ण का शंख था और दोनों ने उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ बजाया, saying which denotes that they were ready, they were battle ready. And then suddenly something happened. Just as he was about to fight, pick up his weapon and kill, Maya attacked him.
So before the Kauravas could attack him, he was attacked by Maya Devi. And he got his first trickle of a doubt in his mind. And instead of shooting his arrow, he told Krishna, take me to the center of the battlefield. I want to see who's there. Although he knew kaun hai. And then, of course, there was a huge, we have seen all his symptoms. They were just like the symptoms of a small child. 5 साल का बच्चा कहीं अगर अंधेरे में खो जाता है या माँ बाप से बिछड़ जाता है तो उसकी जैसे हालत होती है, he starts crying, he starts shivering. ऐसी हालत हो गई थी the great धनुर्धर गांडीवधर अर्जुन की. And then we come to chapter 2. So we finished chapter 1, where Sanjay says, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. So he had given up. He completely gave up, which is an unusual thing to happen. So now, in the beginning of the 2nd chapter, seeing Arjun full of compassion. अब हमने ये भी देखा कि अर्जुन की ये जो हालत थी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज की वजह से हो रही थी जो हम अप्रिशिएट करेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है. He is compassionate. He is worried about the next generations. He is worried about the ancestors. He's even worried about his enemies and what's going to happen to the women, what's going to happen to the children. ये तो सब बहुत अच्छे भाव हैं. What could possibly be wrong with that? And that's what Sanjay says, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears. Can you imagine a Kshatriya crying? And that too on a battlefield? Madhusudan Krishna spoke the following words. So again, Krishna has been addressed as Madhusudan by Sanjay here. Why? Because Madhu is the name of a demon, Sudan, killer of the Madhu demon. Hoping that just as you killed the Madhu demon, I pray that you can kill the misunderstanding in my heart, the ignorance in my heart. That's the plea. Bhagwan ke, actually God has no name, and yet God has millions of names. उनका कोई एक नाम नहीं है और उनके करोड़ों नाम हैं. वो कैसे? According to his crores of qualities. वो जितनी लीलाएं करते हैं, उनकी जितनी क्वालिटीज पता चलती हैं, उन्हीं क्वालिटी के ऊपर उनके नाम रख दिए जाते हैं. अब जब वो गायों की रक्षा करते हैं, प्यार से उनको गोपाल बुला दिया जाता है. जब वो हमारे सेंसेस की रक्षा करते हैं, उनको ऋषिकेश बुला दिया जाता है. जब वो हमारी माइंड की रक्षा करते हैं, उन्हें गोविंद बुला दिया जाता है. So according to his crores and crores of leelas, he has so many names. So you will see in Bhagavad Gita, he is addressed by different names in different verses to convey a meaning. That इस वक्त हमारी आपसे ये याचना है. जब हम कहते हैं हे करुणा सागर, उस वक्त हम मर्सी की याचना कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं करुणा सागर. तो इस समय उनको मधुसूदन बोला गया है, उनसे याचना की जा रही है कि kindly kill this misunderstanding that has come into my heart because I'm completely bewildered and I don't know what to do. So what I'm going to do is, it's a very small purport, and can I request Prachi to read the purport? Yeah. Material compassion, lamentation, and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudan is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjun wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress. Yeah, I would like to stop there. Yeah. This is a very significant, the whole crux of this verse is here, that no one knows where compassion is to be applied. Compassion by virtue is very good. And दुनिया चलाने के लिए, दुनिया में peace रखने के लिए compassion compulsory है. In fact,
It is non-negotiable. We must have compassion. The problem is that it has to be applied rightly, in the right place, at the right time, for the right purpose. And that's where, when we misuse the application of compassion, is when problems arise, not only for us, but even for the others. So it's not that compassion is good all the time for all people at all times. And similarly, this applies to all the virtues. All the virtues like kindness, tolerance, forgiveness, compassion, ये बहुत अच्छी qualities हैं और ये ज़रूरी भी हैं. Yet you need intelligence on where to apply them and how to apply them. And if these very virtues and good qualities, when applied at the wrong time to the wrong people at the wrong place, can become a disaster, can even lead to world war. So here, this is what is being pointed out, that compassion that Arjun is showing right now is being shown for the body. और हमने एग्जाम्पल देखा था last time of supposing a very rich man is drowning, and बाहर वो he's gone for a swim in a beautiful river, and suddenly the current picks up and he starts drowning, and he starts crying for help. And his own people, his own servants who are standing outside, they run and they start rescuing his Rolex watch that is lying on the banks of the river, his Bentley car, his very expensive Armani tuxedo or dress, and his Gucci bag, and all his precious accessories which the world dies for. They start picking that up and saving it. And then they come satisfied, oh, we've saved him. Did they really save the person? Or because those were very expensive, he spent his whole life collecting them, first earning the money to get them and then getting them. So what were you supposed to save? The accessories? Or the man is still in there shouting for help. It didn't help him one bit when they saved his Bentley. उसका टो भी सेव नहीं हुआ. जब उसकी इतनी बड़ी बेंटली कार सेव कर ली गई, तो उसका एक नाखून भी सेव नहीं हो पाया. फिर उसकी जब गुच्ची और प्राडा सेव कर ली गई, तब उसका एक कान भी सेव नहीं, एक भी बॉडी पार्ट उसका सेव नहीं हो पाया. So how is it that जिस चीज के लिए सारी उम्र लगा दी, सारी जिंदगी लगा दी, प्राइम यूथ लगा दिया, उसको सेव करने से थोड़ा बहुत तो उसे फर्क पड़ना चाहिए था, उसको सेव हो जाना चाहिए था, but no, not even a millimeter helped, and the man drowned ultimately, and he died. So that exactly applies to us. This body right now is our Gucci. It's our Armani. It's our whatever is precious to you. Versace, that's this body. But आप इसको जितना मर्जी इसकी AMC करवा लो, इसको चमका के रख लो, इसको जो मर्जी कर लो, you will still be thirsty and unhappy as long as you are not feeding the person inside the Armani. As long as you're not nourishing the person who is driving this Gucci and Armani. So this is where compassion has to be applied. Compassion has to be applied for the spirit soul, that is the driver that is running, that is sitting inside this body. Compassion has to be for that, not for the body. So हम क्या करते हैं? बहुत दुनिया में बहुत भूखे लोग हैं, बहुत अनपढ़ बच्चे हैं, बहुत डिप्राइव्ड विमेन हैं, विधवाएं हैं. इनको खाना दे दो, इनको शेल्टर दे दो, इनके लिए अनाथाश्रम बना दो, इनको पढ़ा दो. अच्छी बातें हैं. Yet, is it going to really help them if this is all that you're going to do for them? Unless you save the souls of these people, these NGOs or these compassionate activities or these charitable activities are really not going to soothe the pain in the heart of these people. You may feed the child 1 day, 2 days, 3 days, or even maybe for the rest of his life. But if you don't teach him the purpose of his life and why he is here and what he's supposed to do with his youth, with his childhood,
with his energy, we are doing we are putting our compassion in the wrong place. It's not enough. And this is what is driving the world today. Everybody feels that Samaj Seva, NGO Seva is the best kind of Seva and it's enough. Iske aage kuch karne ki zarurat nahi hai. But we really are just saving the Guccis and Armanis of this world. We are not saving the drivers, the people using those. Compassion has to be applied there, and hence knowledge of self-realization is the most important knowledge that has to be shared with everyone. इस knowledge का प्रचार can really save the life of a person. This knowledge could have saved the life of Sushant Singh Rajput. उसके पास सब कुछ था. He had a bank balance to die for, but it could not save him because nobody reached out to his soul. Nobody gave him the science of self-realization. And as a result, what happened? His achievements, his bank balance, his name, fame could not save him at that time of depression, at that time of anxiety when he was down and low. If this knowledge had reached him, it could have saved his life. This is how critical prachar is right now. Preaching is this critical today. Because mental illness is at an epidemic levels today more than ever before. People are suffering more from mental illness than from hunger. Even the poor are suffering from mental illness more than from hunger. They are in extreme anxiety on what to do and why to do and how to do it. And we can do a lot in this condition of society. The compassion for the dress of a drowning man is senseless. Prabhupada is saying that it is senseless. He's not even giving it 1% credit. Yeah, Prachi, can you continue? No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by the rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra, or one who laments unnecessarily. So please note that Shudra is not an untouchable or a Dalit or a sweeper out there who cleans septic tanks. The definition of Shudra is one who does not know the real purpose of life and who lives like an animal, eating, drinking, mating, having sex and defending. He is a Shudra. So you can imagine कौन Shudra है आजकल society में. कौन है Shudra फिर? How many levels are there in the society? I think 100% of the society is Shudra. Isn't it? It's not just those people out there, the Dalits. That is why it is so important to read the Shastra. Religion ko khatam karna is not the solution to remove hatred from society. Some people think that religion is the cause of hatred, religion is the cause of fighting, religion ko khatam kar do. Religion ko nikal do, let us all become secular and then we will become peaceful. Well, that's just like saying that there are too many accidents happening on the road. Let us stop, block all the roads today, block all vehicles from today, and let us all continue to sit in our homes and work like that. That's how immature this idea is. The real understanding, the correct understanding would be understand the real religion. Remove the misinterpretation of religion. Educate people towards what real religion is, because all problems of life are actually in authentic, bona fide religion, which is the Bhagavad Gita. So understanding the practical application of Gita and the real purpose of why religion was meant for the human society is the real purpose of practicing religion, not completely doing away with religion and becoming a secular society that is godless, mindless, agenda-less, goal-less. All their goal, the goal of a secular society is eat, drink, and make merry, for tomorrow we shall die. They are asked
we are asked to have compassion for everyone and everybody and everything, but then again, misplaced compassion. We don't know where to show the compassion from. So there is a great danger in practicing compassion, love, forgiveness, tolerance without a goal, without a purpose, and without a higher goal. Otherwise, we are no less than Shudras. So this is the real definition of Shudras. अगर ये भगवद गीता स्कूल्स में पढ़ानी शुरू कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली इंटॉलरेंस विल कम डाउन, जाति और कास्ट सिस्टम को लेकर विवाद खत्म हो जाएगा. Unfortunately, some people feel that भगवद गीता को destroy करके और इसको ना पढ़ा करके ही there can be peace and love and unity in the society. Yes. Arjun was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose, the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority, Lord Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. Yeah. So the last line is significant, that you can realize the real purpose of your life only when you're not attached to the results of your work. Fruitive results matlab फल, मेरे कर्मों का फल, मुझे क्या मिलेगा? And this is what is driving the world today. What is in it for me? अगर मैं ये करूंगी या करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा इसमें क्या फायदा है? यहाँ तक कि रिलीजन के लिए भी वो यही इसी तरह से डिसाइड करते हैं किस मंदिर में जाना है, कहाँ किस दरगाह पे चादर चढ़ानी है, किस मंदिर में दिया जलाना है, कहाँ किस पेड़ की जगह बांधना है, कौन सा व्रत रखना है. इन सब के पीछे एजेंडा एक ही है, मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में मेरा क्या फायदा होगा. और इस उद्देश्य से और इस एटीट्यूड से हम जो भी काम करेंगे, चाहे वो रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स ही होंगे, we will always be miserable. So you will get realization of your soul. Soul consciousness केवल तभी develop होगी when you work without attachment to fruitive results, where you are working for reconnecting with the real you inside, getting to know the real person inside your body. Okay, second verse, most important. Prachi, aap padhoge? हाँ. Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagwan throughout the Gita. I'm talking about the verse. तो verse नहीं पढ़ूंगी मैं. नहीं पढ़ा जाएगा. So, Vanita, unmute yourself, please. Yeah. So, Reshma, would you like to read? Or YG, would you like to read verse 2? Yeah. Okay, I'll try, Vanita. Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kasmalamidam Vishame Samupastitam Anarya Jushtam Asvargyam Akirtikaram Arjuna. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy." So, Arjun is of course a very dear friend of Krishna. ऊपर से कृष्ण की बुआ का बेटा है, उनका nephew है. On top of that, he belongs to the Pritha dynasty. इतनी illustrious mother का बेटा है, Kunti.
इंद्र का पुत्र है, पांडव का के वंश में है, कुरु डायनेस्टी में है, कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड है। इतनी जबरदस्त इलस्ट्रियस बैकग्राउंड होने के बावजूद जब वो इतनी हल्की बात और इतना सुपरफिशियल लेवल पे बिहेव कर रहा है, कृष्णा इज एक्चुअली शॉक्ड एंड कृष्णा इज लुकिंग एट हिम एंड सेइंग, Arjun, how have these impurities come about you? He was not expecting him to even ask this kind of a question. जिस वो कैलिबर का है, जिस इंटेलिजेंस का है, जिस डायनेस्टी से आया है, जिस लीनिएज का है, it is actually not a small thing that he is suffering from this bhav rog. उसे इस मायावी दुनिया का रोग लग गया है। ये कृष्ण को बहुत हैरानी हो रही है कि मेरे साथ होते हुए ये how has this come upon you? So you can imagine that if अर्जुन का ये हाल हो सकता है, what chance do you and me stand for? More so, we are in the middle of Kalyug now. ये अर्जुन तो at that time द्वापर युग में था, कलयुग had not yet set in. अभी कलयुग आया नहीं था. As long as Krishna was present on planet Earth, Kalyug could not even put a foot or a toenail. अपने toenail भी नहीं रखने की जगह थी उसके पास, या उसकी हिम्मत हो रही थी. ऐसे समय में द्वापर युग में कृष्ण के प्रेजेंस में, फिजिकल प्रेजेंस में, if Arjun can go through, can be attacked by Maya, by bewilderment and illusion, you can imagine how precarious our situation is today and how important it is for us to understand and read the Bhagavad Gita, more important than any degree and any professional achievement that we can think of today. Because this alone can save our life, nothing else. So we will read the purport. Purport पढ़ने के लिए अनुराधा. Anu? हाँ, पढ़ोगे? पढ़ोगे हरे कृष्णा? हाँ, I will read. Okay, पढ़िए. Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagwan throughout the Gita. Bhagwan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in three phases of understanding, namely the Brahma, or the impersonal or pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead. Lord Krishna, in Srimad Bhagavatam, this conception of the absolute truth is explained thus. मैं ये try करती हूँ. I'll try to read this. Okay. If I will not be able to read, then आप पढ़ना. अच्छा. Okay. वेदांति तत्व विदास तत्वम यज जन्मम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते. Okay. So vadanti tat tattvavidas tattvam yaj ajnanam adhyayam brahmeti paramatmeti bhagwan iti shabdyate. You can read the translation. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. These three divine aspects can be explained by the example. Anu, we'll stop here. Okay. जैसे हमने last time देखा था that this is the first time किसी श्लोक के शुरू होने से पहले the title, ऊपर जो title दिया गया है, that is श्री भगवान उवाच. कृष्ण उवाच नहीं बोला गया, मधुसूदन उवाच नहीं बोला गया, श्री भगवान उवाच बोला गया, and this is very, very significant. Vyasdev could have written anything there, you know, but Sanjay is specifically saying that
Shri Bhagwan, the Supreme Personality of Godhead said. So कौन बोल रहे हैं? उसके ऊपर the spotlight is on that. So I would like to read this paragraph first before we read the other paragraphs. The next page पे आप आ जाइए और जो second paragraph है वो पढ़ते हैं. The Sanskrit word Bhagwan is explained by the great authority Parashar Muni, the father of Vyasdev. मिला सबको? भगवान, भगवान का मतलब है जैसे हम कहते हैं बलवान, जो सभी बल का ओनर है, सभी बल को धारण करने वाला है, उसे कहते हैं बलवान, है ना. प्रकाशवान बोलते हैं, मतलब जो जिसमें खूब जो बहुत से सारे प्रकाश को धारण करने वाला है, उसे हम प्रकाशवान बोलते हैं. उसी तरह all the opulences of this world, सभी भग means opulences, जो सभी opulence को पूरी मात्रा में 100% मात्रा में धारण करने वाले को भगवान बोलते हैं. तो हम भगवान को बहुत ऑर्डिनरीली यूज करते हैं और फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यूज करते हैं, बट एक्चुअली भगवान का मीनिंग है the owner of all opulences. So who can qualify to be called as Bhagwan? You really have to think, and you will find that no one is qualified to be called Bhagwan except Lord Shri Krishna. So Parashar Muni, the father of Vyasadev, उन्होंने इसकी definition दी है. The definition is, Anu, you can read. The Supreme Personality. You have to unmute. The Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all sensation is called Bhagwan. There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached, but no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the Supreme Personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, and Narayana, can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primeval Lord. Primeval Lord or Bhagwan, known as Govinda, and he is the supreme cause of all causes. We'll stop here. So, there are 6 qualities. The next time anybody, any guru in the society stands up to claim he is Bhagwan, please cross-check that person against this definition given by Parashar Muni, who is the father of Vyasadev. व्यासदेव जिन्होंने सभी वेदों की रचना की, उनके भी पिता. So you can imagine कितने learned होंगे वो, क्योंकि उन्होंने ही व्यासदेव को सिखाया. So Parashar Muni is saying that he who possesses these 6 things in totality मतलब उनसे ज्यादा और किसी के पास नहीं है. और नॉट जस्ट इस लोक में, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, चाहे इंद्र के प्लैनेट पे चले जाओ, स्वर्ग के जो राजा हैं, कहीं पे भी चले जाओ, anybody who can claim that he has more riches, more strength, more fame, more beauty, more knowledge, and more renunciation than Krishna can call himself Bhagwan. Otherwise, he is just an imposter. This is the way to check whenever people claim or anybody claims that he is Bhagwan or he is God. Okay, so these 6 parameters have to be in that person in full, in 100%, and not just in this planet, in the entire planetary system, pure Brahmand mein. But Krishna is the one who qualifies. He can, वो किसी को किसी भी planet से बुलाकर अपनी सेवा में लगा सकते हैं, जो कि उन्होंने अपनी throughout अपनी लीला में किया. इंद्र उनके सामने आकर गिड़गिड़ाए, पैर उनके आगे, उनके पैरों में पड़े हैं,
पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा आए उनके पैरों में पढ़ रहे हैं, तीनों लोकों के लोग who could not realize that this is the Supreme Personality of Godhead, who couldn't realize he is Krishna, made so many mistakes, and then ultimately they came and they were begging forgiveness from him. So he can summon anyone or everyone from any planet, anywhere, and they come running because they are all his loving servants. Out of love and affection, they serve him. Hence, he is called the Supreme Personality of Godhead, the one and only. So one of you had asked me this question last week. इसमें एक line है, no living entity including Brahma, Shiva or Narayan. Neither Brahma nor Shiva nor Narayan. ये हम बचपन से अब तक बड़े हुए हैं, क्योंकि unfortunately gurukuls were killed in our हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने से ही गुरुकुल्स का नाश हो गया था. सो अनफॉर्चुनेटली ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भागवतम पढ़ी, ना हमारे पेरेंट्स ने, और हमारा तो क्या ही चांस है. यू नो, वी आर सो अनफॉर्चुनेट. सो दैट इज व्हाई वी हैव बीन रेज्ड इन दिस कल्चर ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश. हम सबको बस यही पता है कि सृष्टि के जो सुप्रीम और टॉप मोस्ट हैं वो ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों बराबर हैं, तीनों इक्वल हैं. एक सृष्टि का रचना करता है, एक इसको मेंटेन करता है, और एक डिस्ट्रॉय कर देता है. बट दैट्स ओनली द हाफ द ट्रूथ, because we haven't read either the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam. It very clearly says that the first expansion, अगर आप सब बलराम जयंती पे अगर कथा सुन रहे होंगे, कुछ दिन पहले ही बलराम जयंती गई, the appearance day of Lord Balram, उसमें उस कथा में बार बार जितनी कथाएं हुई उसमें बार बार बताया गया है that Krishna, earlier he is the primeval. Primeval means the first, the oldest, the Adi Purush. और सबसे पहले जब कृष्ण का मन हुआ to enjoy a relationship with someone, he expanded himself into Lord Balram. From his right side, Lord Balram appeared, the right side of Krishna. So there is no difference between Balram and Krishna. He is the expansion of Krishna. So he is Krishna himself. And then Lord Balram further expanded into Shankarshan. Shankarshan is the Sheshnag, the million-hooded serpent, which is holding this entire Brahmand on his head. And Shankarshan further expanded into Chaturvyu. And Chaturvyu mein kaun hai? Anirudh, Pradyumna, Narayan. And then from all these are the Vishnus. कौन से विष्णु है? Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu. Mahavishnu is the Vishnu who created this material world. He lay down on the causal ocean, Karan ocean में वो लेट गए और अपने माइंड से उन्होंने, when he breathed out, तो उनके nostril से millions of ब्रह्मांड पैदा हुए. That is Mahavishnu. और वो सारे ब्रह्मांड, they are just hanging like swabs of cotton in around him in space. Nobody knows कि उनका weight कौन उठा रहा है. He's Mahavishnu himself. And but अब तक they are निर्जीव, उनमें life नहीं है. And then Mahavishnu opens his eyes and glances on these millions of planets that are hanging around him in space. And when he glances on them, they get agitated by material energy and they get life. मतलब ये जितने भी उनके nostril से निकले, ये सब energy है उनकी, ये सब प्रकृति है, Mother Earth hai. That is his female, feminine energy. And when he looks at them, the female energy gets impregnated. She becomes pregnant just by the glance of Mahavishnu, and life is born in these planets. So when he glances at them, life is born in these planets, and he stays in each of those planets as Kshirodakshaya Vishnu. So Mahavishnu जो इनको produce करते हैं, Kshirodakshaya Vishnu जो इनके अंदर समा जाते हैं और इनको लाइफ देते हैं. And then all the living entities in each of those planets, उन सबके अंदर एक सुपर सोल है. मतलब एक पत्थर भी है तो उसके अंदर भी सुपर सोल है. एक छोटा सा बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोरोना वायरस भी है, उसके अंदर भी एक सुपर सोल है. All those super souls are
गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 तरह के तो विष्णु हैं। क्या हमें ये पता था? We just knew of one विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। बट एक्चुअली महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब चतुर्व्यूह से आए। और चतुर्व्यूह कहाँ से आया? शंकरशन से। और शंकरशन कहाँ से आए? बलराम से। और बलराम कहाँ से आए? कृष्ण से। कृष्ण से। So ultimately, where is Vishnu coming from? कृष्ण। Here. There is no doubt, no confusion. Vishnu is coming from Krishna, and not just one Vishnu. All these varieties of Vishnus, millions of Vishnus, are all coming from Shankarshan. And Shankarshan is coming from Balaram, and Balaram is coming from Krishna. Hence, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. ये साइंस हम सबको जाननी बहुत जरूरी है. You know, we are being kept in the dark. And we are being forced not to read this. In fact, our children, our future generation को brainwash किया जा रहा है. शास्त्र मत पढ़ो, ये mythology है. This is mythical. ये मनगढ़ंत है, fiction है. And then they try to make sense of who created this world. Maybe there was a big bang. Maybe हम बंदरों से आए. Maybe हम ape से आए. तो इस science को गाड़ कर जमीन में, then they are trying to experiment and find out how we were created. Naturally, किस तरह के conclusion पे हम पहुंचेंगे? Brainless conclusions पे ही पहुंचेंगे, जो बोलता है हम बंदर से आए. That's the brain that our scientists have. You know, हम महाविष्णु से नहीं आए, हम बंदर से आए. That's the difference between materialistic education and Vedic education. But mind you, not mindless Vedic education, not misinterpreted Vedic education, but bona fide Vedic education that is coming down from Bhakti Vedants, from scholars, from a parampara, from a disciplic succession that is bringing this information to us like a postmaster without even changing a full stop or a comma. Just as Krishna spoke to Arjun, it is reaching us without any misinterpretation. Hence, Brahma, Vishnu and Mahesh are all in the service of Krishna. Krishna is the only Adi Purush, the primeval Lord. Am I right, Meena? आपने तो ये काफी डिटेल में पढ़ा है. यही है ना sequence? Yeah. So I hope now Brahma, Vishnu, Mahesh की clarity हो गई सबको. Okay. Yeah. So now we will come back to the first paragraph, having settled this. Now we will come to Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwaneti. इति शब्दयते. So इसमें ये बताया जा रहा है कि हम सब भगवान की 3 तरह की realizations करते हैं. The entire population of this world. एथीस्ट को छोड़ के, जो कहते हैं कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, सब कुछ मुझी से शुरू हुआ और मुझी से खत्म हो जाएगा और तो कोई है ही नहीं. पृथ्वी को तो बस तुक्का चला रहा है, मैं भी तुक्के से हुआ और तुक्के से ही मैं मर भी जाऊंगा. So उनको हम छोड़ देते हैं, इनसे उनकी तो क्या ही बात करनी है. But let's talk of the other people who say that some people, most of us, majority of the people understand God as Brahmeti. Brahmeti matlab the energy, the Brahman feature of the Lord. What is the Brahman? This is not pronounced as Brahman, this is Brahman. Brahman feature of the Lord is the energy of the Lord. Okay? So, इसको हम पढ़ते हैं. Let me ask वर्षा, आप पढ़ोगे? ओके, आप पढ़िए इशिता. The absolute truth. Should I start? Yes. Yes.
I think इनका disconnect Absolute हो of गया. standing by the knower of I think आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है. I'll request Anu to read it. Anu. Okay. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Therefore, the Bhakt or the transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists, although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter. The sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of the three different phases are not in the same category. Okay. So there are many who will approach God in one of these three ways. Some people try to understand God through meditation. Some people try to understand Him by His direct worship, while others try to understand Him with yoga. Now, while all three are students of spirituality, yet all three are not at the same intelligence level. और results भी तीनों को अलग ही मिलेंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे. However, all three are studying the same subject matter, the Supreme Personality of Godhead. लेकिन अपनी अपनी intelligence और समझ बूझ के हिसाब से they will take one of these three processes. So the lowest level is the Brahman realization. So these students are satisfied just by realizing that, oh, Mother Nature around me we have come from Mother Nature, और हम मरने के बाद इस मदर नेचर, इस मिट्टी में ही, मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही हम बाद में मिल जाएंगे. And they're satisfied with this. They are not interested in understanding any further कि मिट्टी कहाँ से आई, मिट्टी को किसने बनाया. So yes, they also have an understanding of God, but yet it is a very basic or preliminary level. So the fruit that they will get from this kind of understanding will also be lesser than what an advanced student will get. The other the next level of realization is कि अगर मदर नेचर ने सब कुछ बनाया है और मदर नेचर ही हमें कंट्रोल कर रही है, तो मदर नेचर को भी किसी ने बनाया होगा. ये कहाँ से आई है इस मदर के? अगर मदर है तो फादर भी कोई होंगे, और इन मदर फादर का, अगर हमारी मदर सब कुछ है, what happens to the father, or is there a father at all or no? That is the Paramatma feature. That's the next level of understanding. So as a Paramatma feature, these people try to engage in Ashtanga yoga, in meditation, in all kinds of asanas, yam and niyam, and they try to connect with the Paramatma sitting inside their heart, who has a feature. While Mother Nature has no feature, right? Can you describe Mother Nature? उनका feature नहीं बता सकते. We can just say, oh, all these plants, all these rivers, this air that we are breathing, everything is Mother Nature. So it is shapeless, formless. It's just an energy.
And then the next level of understanding, a little more intelligent level of understanding, is that no, Mother Nature comes from the Paramatma, that's the Father, and he has a form. He has a 400 form and he sits in our heart. Unki ek jagah bhi hame pata hai, localized jagah hai unki, he sits in our heart. And through yoga they try to connect with him. And what do we mean by they try to connect with him? Unhe dekhne ki koshish karte hain. That's about it. Service nahi hai wahan koi. Unka darshan karna. That's at best a student of the Paramatma feature can reach at best there. And then comes the next level. The student of even more higher intelligence will not be satisfied by just being here. Then he will try to understand that if this Paramatma feature who is in my heart, who is he? What is his personality? What are his likes and dislikes? What does he want? Why has he created us? What is my relationship with him? How do I love him and interact with him? How can I serve him? Where is he God? Where can I meet him? How do I reach him? This is the highest and topmost understanding. And this is the Bhagwan-eti, Bhagwan understanding of God. That Bhagwan is a person. He has a personality. He has a definite planet where he lives in. And उन्हीं से ये material nature बनी है, उन्हीं की energy है जो हमारे चारों तरफ हमें हमारा nourishment कर रही है, हमें पाल पोस रही है, ये उनकी energy है. However, he is not some shapeless, formless, nirakar, nirvikar person. He is a person just like me. If I have a personality, I have likes and dislikes. मुझे बनाने वाले की भी personality जरूर होगी. If such an intelligent person has created me, he himself would be so much more intelligent. He would have a higher personality and higher intelligence than me. और उनकी भी अपनी एक family होगी, उनका भी अपना एक planet होगा जहाँ पे वो रहते होंगे, उनकी likes और dislikes होंगी, और मेरा उनके साथ क्या relationship है, और मैं उनको कैसे पा सकता हूँ, उनसे कैसे मिल सकता हूँ. That is the highest form. So Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwaneti, Shabdayate. These are the three levels of understanding. All three are the one and the same thing, yet the results of all three are different. Only the Bhagwan-eti student will be able to meet Bhagwan and reach Bhagwan and apply. In this life, he will be able to protect himself from all the onslaughts of Maya. Because if you keep your faith and believe in a personality or a person that is higher than you, who is more intelligent than you, and who is the creator and the lawmaker of this universe, you will try and follow all the rules and regulations of that lawmaker, which the Brahmeti and Paramatmeti may not do. He's not bothered about finding about the rules and regulations. He's just happy enjoying the creation of the creator. There is no service bhav. There is no feeling of developing a relationship with the person who has created him. So there's having love for the personality of God. It is out of question at the Brahmeti and Paramatmeti level. There is no love. It is just understanding that, yeah, he is there and I come from him. There is somebody higher than me. But the main goal of our life still is to enjoy the fruits of this world, the fruits of my actions. We are doing all this. Ultimately, हमारा goal क्या है? To enjoy. But the Bhagwan-eti understanding, the devotee who is working, who is trying to understand the Bhagwan aspect of God, has the mood of serving him. And he has the mood of trying to find out what is right and wrong. What am I supposed to do? What am I not supposed to do? How can I please this person? How do I not displease this person who has created me? Who is he? What does he look like? Where does he live? वहाँ पे सबसे ज़्यादा personal interaction है. और जहाँ पे ये effort होता है to find out the person, the real person, and serve him, that's where you have most chances or an opportunity to develop love. And once you develop a love and relationship like Arjun has developed of Krishna, he takes care of you completely. He protects you from all danger. He guides you. So he automatically, if you are working at the Bhagwan-eti level, you understand Paramatmeti, you understand Brahmeti automatically. But if you are at Brahmeti, you may understand
Paramatmeti Bhagwaneti, you may not. Then there are chances that you may not. Or if you are at Paramatmeti, you may understand Brahme, you will understand Brahmeti, but you may or may not understand Bhagwaneti. So the intelligent person will not waste time at Brahmeti and Paramatmeti, but he will straight away work at Bhagwaneti. And the higher this level is, the simpler it is. Paramatmeti is more tough and Brahmeti is even tough. And it's confusing. You can go this way or that way or any way, and yet you may not get the answers to your questions. It's highly confusing and misleading. So intelligent people who, because we are short of time, we are in Kali Yuga, umar bhi kam hai, memory usse bhi kam hai. So the intelligent people will not waste time and immediately try to understand the Bhagwaniti aspect of God. That's the fastest, the quickest, and also the easiest. Hence it is written here, Brahmeti Paramatmeti Bhagwaneti iti shabdyate. And that's why he's saying Anarya Justam. Arya matlab very intelligent people who know the goal of life. Anarya means not so intelligent. And he's saying, Arjun, you're talking like an Anarya person. You are an Arya Putra. You come from the Aryan civilization. The topmost intellectual, brilliant cream of the society. And you are talking like this? You're talking about the body? Okay. Let's read this verse from the Brahma Samhita. Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadir Govinda Sarva Karana Karanam. This verse is from Brahma Samhita. Brahma Samhita किसने लिखी है? Well, it's very obvious, from Lord Brahma. Who is Lord Brahma? The first living entity of this world. सबसे पहले ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से ही बाद में हम सब आए. And so Brahma is by no means an ordinary living being. He is the most intelligent. And we belong to that planet which is ruled by the Chaturmukhi Brahma. There is one-headed Brahma, two-headed, three-headed, four-headed, 10, 100, 1,000, 10,000, million-headed, million, trillion-headed Brahmas. इतनी varieties of Brahmas हैं, क्योंकि इतनी variety के ब्रह्मांड हैं. फिलहाल हम, this is also written in our Shastra, in Manu Smriti, in Srimad Bhagavatam, that our current civilization is being ruled by Chaturbhuji, Chaturmukhi Brahma, four-headed Brahma. So you can imagine that एक brain ही जो ये इतना सारी सृष्टि को बना सकी है, he has four brains. How much more intelligent he must be. And all four brains work simultaneously. ये नहीं कि at a time 3 standby mode पे होते हैं, एक को switch on करके use किया जाता है, फिर उसको charging पे लगा दिया जाता है और फिर दूसरे को use किया. No. All four are working at the same time. So उनके चारों मुख simultaneously चारों वेद को प्रचार कर रहे हैं, का बखान कर रहे हैं. All the four Vedas are born from his four mouths simultaneously. He's so brilliant. That Brahma has written this Brahma Samhita. और वो ब्रह्मा जो ब्रह्म संहिता के रचना करता है बोल रहे हैं इस वर्ष में, ईश्वरः परमः कृष्णः. ईश्वर में, वैसे ईश्वर का क्या लिटरल मीनिंग क्या है? ईश्वर का कंट्रोलर. तो हम सभी ईश्वर हैं एक तरह से. हम सब माइन्यूट क्वांटिटीज में कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर ही सकते हैं. वी आर ऑल स्मॉल कंट्रोलर्स. लेकिन इन सभी कंट्रोलरों का जो कंट्रोलर है, ईश्वरः परमः इज कृष्णा. सभी ईश्वरों का जो परम ईश्वर है, दैट्स कृष्णा. सच्चिद आनंद विग्रह. हिज विग्रह इज मेड अप ऑफ सत, चित एंड आनंद. Eternal knowledge, bliss, and what is Sat? Eternal, full of knowledge and bliss. Sat Chit Anand Vigraha. Anadir Adir Govinda
सर्व कारण कारणम, सर्व कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सभी कॉजेज, सभी चीजों के जो कारण है वो एक दूसरे के कारण है। हमारा कारण हमारे पेरेंट्स हैं, उनका कारण उनके पेरेंट्स हैं, उनका कारण उनके पेरेंट्स हैं। ऐसे करते 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 अगर आप जब टॉप मोस्ट पहुंच जाए, यू विल रीच वन पर्सन जिनका कारण आगे और कोई नहीं है, वो खुद ही अपने कारण है, वहीं से शुरुआत हो रही है। दैट्स कृष्णा। उनका कोई कारण नहीं है। He was always there, and he is the fountainhead or the beginning point of all the other karans. That is Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. There are many personalities possessing the qualities of Bhagwan. बहुत लोग हैं, छोटे छोटे भगवान तो बहुत हैं, हर प्लैनेट का एक कोई अपना भगवान होगा, बट कृष्ण इज द सुप्रीम। उन सभी भगवानों के जो भगवान हैं, परम ईश्वर हैं, दैट इज कृष्ण, बिकॉज नो वन कैन एक्सेल हिम। जो क्वालिटीज कृष्ण में है, 64 क्वालिटीज, none of them have it. Not even Balram. Balram has 60 and Krishna has 64. So there are 4 qualities extra that Krishna has that even Balram doesn't have. That's why Ishvaraha Paramaha Krishna. He is the supreme person and his body is eternal. Eternal का मतलब उनको पैदा नहीं होना पड़ता, वो कभी पैदा नहीं हुए, वो हमेशा से ही थे. And he does not have to come for a reason. अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हें यहाँ पे जन्म नहीं लेना पड़ता, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं. हम अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए यहाँ पर आते हैं, but he comes by his own will. That is why he decides, okay, आपके घर में आऊंगा, तैयार रहना, इस समय आऊंगा, तैयार रहना. प्लैनेट्स को बोलते हैं, ओ प्लैनेट्स ठीक से लाइन में लग जाओ, I want to appear at this time. इस डायनेस्टी में मुझे आना है, क्लीन अप, क्लियर अप. Can we afford to do that? Can we decide when to come, which planet to come, which family to come in? But Krishna can do that and he has done it. Every time he dictates, एडवांस में बता देते हैं, फलाने टाइम पे आऊंगा, ये मेरे माता पिता बनेंगे, इस डायनेस्टी में आऊंगा, इतने समय पे आऊंगा. And then अपने सभी सर्वेंट्स को, देवी देवताओं को कह देते हैं, जाओ सेवा में लग जाओ, मेरे आने की तैयारी करो. तो वो सब पहले जन्म ले लेते हैं क्योंकि उनको रिसीव करना है. वो सब पहले अवतरित हो जाते हैं and then they await his arrival so that they can serve the king of the universe. King आ रहे हैं, उनका आगमन करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए. ऑफ कोर्स उनके जो सर्वेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज रेडी. So he is the supreme person, his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primeval Lord Govind and the cause of all causes. In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many incarnations and personalities of Godhead expand. So ये श्रीमद् भागवतम में से, अभी हमने ब्रह्म संहिता का वर्स पढ़ा, अब हम श्रीमद् भागवतम का वर्स पढ़ रहे हैं. फर्स्ट कैंटो, 3rd chapter, 28th verse. एते चाम्स कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे. All the lists of the incarnations of Godhead submitted herewith are either plenary expansions or parts of the plenary expansions of the Supreme Godhead. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. जैसे मैंने अभी आपको समझाया, बताया, शेयर किया, that कृष्ण के राइट साइड से बलराम अवतरित हुए, लेफ्ट साइड से राधा रानी अवतरित हुई. एंड देन राधा रानी से फर्दर सारी लक्ष्मीज आई, पार्वती माता आई, and all the Rukminis and Satyabhamas, all these Lakshmis came from Radharani. All the female forms, female energies, Durga, all of them came from Radharani. And then Balram se immediately, Balram expanded into Shankarshan and Chaturvyu, and then all the Mahavishnus and so on and so forth. तो ये जो सारी lists हैं of incarnations, ये सब या तो expansions हैं, जैसे बलराम कृष्ण के expansion है. फिर बलराम में से जो शंकरशन आए,
ये उनके फर्दर एक्सपेंशन है, तो उसको प्लेनरी एक्सपेंशन बोलेंगे। और शंकरशन से जो चतुर्व्यूह आए, ये उनके भाग के और भाग हुए। तो ये जितने भी दशावतार हैं, कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 10 अवतार में से एक अवतार कृष्ण हुए, तो कृष्ण सबसे बड़े कैसे हुए? उसका ये जवाब है श्रीमद् भागवतम में, एते चाम्स कला पुंसम, के अवतारों के अवतार हो सकते हैं, इस अवतार में से और अवतार आए, उस अवतार के और अवतार आए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं के, लेकिन कृष्ण तू स्वयं भगवान है, तू अवतार नहीं है किसी का। तेरे में से और अवतार आते हैं, उन अवतारों के आगे और अवतार आते हैं, उन भागों के और आगे भाग आते हैं, भागों के भाग होते रहते हैं आगे। एंड कृष्णा कैन एक्सपैंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड अपीयर इन सो मेनी फॉर्म्स, बट उनका अपना, ही इज नॉट द अवतार ऑफ एनीबडी एल्स, वो खुद ही आते हैं। जब कृष्ण आते हैं 10 अवतार की श्रृंखला में, जब कृष्ण आते हैं तो ही कम्स इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, वो किसी का अवतार लेकर नहीं आ रहे, दैट वो अपने ओन अवतार में आ रहे हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब भी कृष्ण यहाँ पर आए, वो कुछ बनकर नहीं आए, गोलोक में भी वो ऐसे ही हैं, उसी फॉर्म में उठ के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हैं। सो ही इज कमिंग टू शो अस दैट दिस इज हाउ आई ओरिजिनली लुक, बट आई आल्सो लुक एज एट, I also look like Balram sometimes. I also look like Brahma sometimes. I also look like Indra. I also look like Durga. I also look like all these different avatars, Shiva that you are seeing. But the original, as my original person, I am the Shyam Sundar. That's my original form. Is that clear? Therefore, Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman. ब्रह्मेति परमात्मेति, इन दोनों के जो सोर्स हैं वो क्या है? भगवान इति श्री कृष्ण। कृष्ण से ही परमात्मा आए हैं और परमात्मा एंड ब्रह्मन आए हैं, ये दोनों कृष्ण के ही पार्ट्स हैं। तो अगर आप कृष्ण को जान लेंगे, ऑटोमेटिकली आप परमात्मा को भी जान लेंगे और आप ब्रह्मन, मटेरियल नेचर और मटेरियल एनर्जी को भी जान लेंगे। सो बुद्धिमता किस में है? फास्टर कौन सा है? एज इट इज इन कलयुग, वी आर लो ऑन पेशेंस, वेरी लो ऑन पेशेंस। इंस्टेंट चाहिए हमें, क्विक वेट लॉस, क्विक डाइट्स, क्विक फिक्स ब्रेकफास्ट मेन्यूज, क्विक। सो हम जितना मर्जी सोच लें कि नहीं हम परमात्मेति लेवल पे ठीक रहेंगे, बट डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन नेचर। वी आर इन कलयुग, वी आर शॉर्ट ऑफ पेशेंस, और sooner or later जब हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, we are going to give it up, we are going to give this process up, because that tendency for looking for quick results will be there and we will not get results. At least Kalyug के लिए it is not recommended at all. It is recommended for Satyug and Dwapar Yug, जहां पर 10,000 वर्ष की आयु होती है, लाइफ स्पैन ही 10,000 वर्ष है, तो ठीक है 5-6 हजार वर्ष निकाल दो एक्सपेरिमेंटेशन में, ब्रह्मेत्वी में, कुछ मेति में निकाल दो, और 5-6 हजार साल परमात्मेति में निकाल दो, फिर भगवान एति में निकल जाएंगे अगले लास्ट के 3-4 हजार साल। बट यू डोंट हैव दैट ऑप्शन इन कलयुग। पता नहीं कब कोरोना बीच में आ जाए, कब कौन सी चीज बीच में आ जाए। 100 साल भी नहीं पूरा ठीक से जीने देते, 80 साल अब तो रह गए 100 में से, उसमें भी इतनी सारी ऑल इफ्स एंड बट्स। कोई एक्सीडेंट, अनटाइमली एक्सीडेंट, अगर सब कुछ ठीक है तो एक्सीडेंट ही हो गया। You cannot afford to waste time. So better to hear the advice of the acharyas. ये आचार्यों ने बताया है, fix your mind on Krishna, the Bhagwan aspect of God, which is Krishna. So therefore Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman. Last paragraph कौन पढ़ेगा? समीक्षा पढ़ोगे आप? अनम्यूट करिए। या नहीं हाँ, लेकिन मेरे पास जो है वो मराठी है, हिंदी है। सॉरी हिंदी। सॉरी। YG, would you like to? Okay. Yeah. In the presence of the Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expresses surprise
with the word kuta, where from. Such impurities were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryans. The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his case. So now you can understand how misplaced his compassion was. His compassion in this case was poison. उसी तरह दान, जैसे दान हर जगह पे नहीं दिया जा सकता. Not all दान is good. दान given to the right person for the right purpose is actually Amrit. Otherwise it's poison. So you have to be very careful where you are giving your daan, where you are using your compassion, where you are using your forgiveness, where you are using your tolerance. You cannot stand and tolerate irreligion being propagated in the society. That kind of tolerance is wrong. In fact, you will get a sinful reaction for not standing up for the religion. कि हमें क्या करना है, कुछ हो तो सकता नहीं है. So, misplaced compassion. Krishna does not approve for this kind of compassion. कोई marks नहीं मिलेंगे इसके लिए कि मैंने तो बहुत अच्छी जिंदगी जी, देखो कितनी दया वाली जिंदगी, कितने मैंने अच्छे काम किए, दुश्मनों के साथ भी दया की. Sorry, negative marking मिल रही है आपको यहाँ पे MCQs में. Don't expect that you will get some marks for that question here. So it is very important for you to understand and read the Shastra, because here is a mine, a storehouse, a gold mine of knowledge and information, where you will slowly realize what to do and also what not to do. And Krishna is himself telling us that. He's so kind. We are so fortunate कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Just open the Bhagavad Gita and chapter by chapter when you read, you will understand a list or a to-do list and a not to-do list automatically बन जाएगी आपके दिमाग में. And then you have to live your life according to that list of what not to do and of what to do. और दोनों ही lists equally important हैं. To-do list भी बहुत important है. Not to-do list तो खैर important है ही. And hence it is saying here कि तुम आर्यों की तरह क्यों बातें कर रहे हो. So हमारी Aryan civilization है. The Vedic civilization is an Aryan civilization. ये Britishers ने आकर, जब Britishers अपने आप को, Britishers को superiority complex था क्योंकि सुंदर थे ना, तो उनको लगा कि हम तो ऊपर से देवता अवतरित हुए हैं यहाँ पर, हम इतने सुंदर हैं, हमारे पास इतनी riches हैं. तो इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दे डिसाइडेड कि हमें सारी दुनिया को जाकर क्रिश्चियन बनाना है, क्योंकि ये सब के सब आदिवासी मूर्ख लोग हैं और इनको हमने अपनी सिविलाइजेशन अपने जैसा बनाना है. यही हमारा पैदा होने का गोल ही ये है. इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे वो. एंड देयर वर टू मेन रिलीजन्स देयर, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. तो जो कैथलिक थे मिशनरीज बनकर, वास्को डी गामा था एक कैथलिक मिशनरी बनके, वो इंडिया की कोस्ट पे पहुंचा और कोलंबस अमेरिका चला गया, अमेरिका की कोस्ट पे, वहां उसने जाकर प्रोटेस्टेंट रिलीजन फैलाया. वास्को डी गामा और ये सब आए जब यहाँ पर, they were shocked कि हमसे भी इतने ज्यादा एडवांस्ड कोई है. उनकी सिविलाइजेशन तो सिर्फ 2000 साल एडवांस थी, 1500 साल एट दैट टाइम और इवन लेस. और उनकी सारी
हिस्ट्री जो है वो केवल ग्रीक हिस्ट्री तक है, उसके आगे कुछ है ही नहीं उनकी हिस्ट्री में। दुनिया उनके हिसाब से ग्रीक्स जब शुरू हुए, रोम का टाइम जब था, उनके हिसाब से दुनिया तभी शुरू हुई, ईव और एडम और ये रोमन एम्पायर एंड ग्रीक्स, क्लियोपेट्रा, ये सब के सब बाद में ये आए, बाद में क्राइस्ट आए। And when they came to India, they said ये तो ग्रीक तो क्या, ग्रीक से भी 40,000 50,000 पीछे की हिस्ट्री है इनके पास, इतनी एडवांस्ड हिस्ट्री एंड फिलोसफी, लेकिन उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ये डाइजेस्ट नहीं हुई बात कि ये हमसे एडवांस्ड है तो हम इनको रूल कैसे करेंगे। एंड देन दे रियलाइज्ड कि इनको रूल करने का एक ही तरीका है, जब इनको ही कन्विंस कर दिया जाए कि आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपके वेद और आपकी फिलोसफी बैकवर्ड है, इसको दिस इज मन गढ़त, ये इमेजिनेटिव फिक्शनल है, तब ये हमारी हर बोली हुई बात को मानना शुरू कर देंगे और हमें सुपीरियर समझना शुरू कर देंगे, तो हमारी बात भी मानेंगे। एंड देयरफॉर दे क्रिएटेड दिस फॉल्स थियोरी कि आर्यंस, हम भी आर्यन से ही आए। उन्होंने ये कहा कि आप आर्यन से नहीं आए, क्योंकि अगर हमारी आर्यंस फिलोसफी को वो मान लेते तो संस्कृत हमारी सिविलाइजेशन में है और ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड, अब तो सभी मान रहे हैं ये, इनफैक्ट जो फ्यूचर सुपर कंप्यूटर बनने वाला है उसके लिए वो संस्कृत लैंग्वेज सोच रहे हैं कि इसको संस्कृत लैंग्वेज में ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें एरर के और बग्स के मिनिमम चांसेस हैं। बाकी सभी लैंग्वेजेस की बहुत कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन संस्कृत इज अ वेरी एडवांस्ड लैंग्वेज। सो व्हेन दे सॉ कि इनके पास तो संस्कृत भी है, हम इनको हम अपना गुलाम कैसे बनाएंगे जब सबसे हाईएस्ट फिलोसफी तो इन्हीं के पास है। तो उन्होंने एक फॉल्स थ्योरी शुरू की कि नहीं, दरअसल एक आर्यन रेस कहीं और पैदा हुई, आर्यन रेस से हम भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, और तो जो आपके पास है वो हमारे पास भी है। तो उन्होंने अपने आप को भी आर्यन सिविलाइजेशन के अंडर डाल दिया ताकि वो भेद दोनों का मिट जाए, क्योंकि उनकी तो फिलॉसफी ग्रीक, उनकी हिस्ट्री तो केवल ग्रीक हिस्ट्री तक ही थी, उसके आगे का तो उनके पास कुछ था ही, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आर्यन फिलॉसफी दुनिया में कहीं शुरू हुई थी, हमें नहीं पता कहाँ शुरू हुई, आज तक ढूंढ रहे हैं इस फिलॉसफी, इस थियोरी का आज तक खंडन चल रहा है, शोध चल रही है कि आर्यंस आए तो कहाँ से आए, कहीं से भी कभी पता नहीं चलेगा, हम ही आर्यंस हैं। The Aryans were the descendants, the भारतवर्ष के descendants, मनु के descendants Aryans हैं, it's the Vedic philosophy. So they said that no, Aryans are a third person, Britishers and Indians both came from Aryans, and therefore दुनिया में होड़ शुरू हो गई कि Aryans कहाँ से शुरू हुए, और World War I वहीं से शुरू हुआ, because somehow Germany ने convince हो गया, एडोल्फ हिटलर के Aryans हम ही हैं, आर्यंस की शुरुआत हुई। सो वी आर द सुपीरियर मोस्ट, और बाकी सबको मार देना चाहिए। एक क्लीन फिलॉसफी, एक नई नस्ल, एक न्यू रेस शुरू करनी चाहिए हमें। तो इसलिए उसने ये जेनोसाइड और ये सब चीजें शुरू की। और हमारा वैदिक धर्म का जो स्वस्तिक साइन है, स्वस्तिक इज द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियसनेस, उसने वो साइन ले लिया, भगवत गीता भी पढ़ी उसने, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करके उसने एक मतलब डिमोनियक हरकत की। So my point is that यहाँ पर don't get swayed by the आर्य word, अनार्य, जो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, अनार्यों की तरह क्यों बात कर रहे हो? That अनार्य here means person who is working on the bodily level. Right now हम सब अनार्य हैं, हम सब शूद्र हैं, क्योंकि हम सब के सब bodily level पर ही काम कर रहे हैं. We are only working for the maintenance of this body, and we are only working for the maintenance of the relationships with this body. But very few, hardly 1% or even less, are working at soul consciousness. लेकिन द्वापर युग की जो ये कहानी है, जहाँ की ये बात हो रही है, उस समय तो सभी soul consciousness में थे. Everybody was working only to develop their soul, and they were not so worried about attached to the bodily platform. That is why Krishna is saying, why are you anarya justam? Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. That's precisely the Britishers and all the other people who came after that. So he's saying, so he's using asvargyam and akirtikaram. ये तीन चीजें कृष्ण उनको कह रहे हैं कि पहले तो तुम बॉडीली कॉन्शियसनेस में हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरे लोग
मेरे स्वजन, मेरी फैमिली, मेरी कीर्ति, मेरे सिंफुल रिएक्शंस, व्हाट इज दिस मैं, मेरा मेरा मेरा। हम यहाँ धर्म युद्ध करने आए हैं, फैमिली युद्ध करने नहीं आए. दिस इज नॉट अ फैमिली फाइट. We are fighting here in Kurukshetra for a higher goal, for re-establishing the principles of Dharam and Asvargyam. He's saying कि आपको जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें पहली बात तो तुम्हें पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, डिफेम ही मिलेगा. Nobody is going to give you credit that you showed compassion for Duryodhan. On the contrary, they are going to say you were a coward. डर के भाग गए. कोई तुम्हें क्रेडिट नहीं देगा कि नहीं तुम बहुत बहादुर थे लेकिन करुणा की वजह से भाग गए. Nobody is going to believe you. और हंसेगी तुम्हारे पर, थू थू की जाएगी. तो पृथ्वी पे तो तुम्हें यश मिलेगा नहीं. ऑन टॉप ऑफ दैट, जो तुम सिंफुल रिएक्शन से बचने की सोच रहे हो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा. तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, वहां से भी तुम्हें लात मार के निकाल दिया जाएगा कि क्षत्रिय होते हुए भी तुमने अपना धर्म नहीं निभाया, तुमने धर्म की रक्षा नहीं की. You did not fight for Dharam and you left the battlefield at such a crucial junction where it was time to save the future generations from the demoniac kings like Duryodhan who would have destroyed religion. So ना तुम्हें पृथ्वी पे यश, ना तुम्हें स्वर्ग में यश. अकीर्ति करम अस्वर्ग्यम अनार्यजुस्तम. So he's saying from any angle that you think of, you are wrong. You are going to be defamed, you are going to be miserable, you are going to be unhappy. So all your logics and all your reasoning is wrong. This is what Krishna is telling him. And he is going to point-wise prove it to him how it is wrong. इस वर्स में तो उन्होंने ओवरऑल खंडन कर दिया, लेकिन आगे जाके point-wise भी उसको बताएंगे how you are completely wrong. So with that, I hope now this verse is clear. I'll just check if there is any more points that I want to share. So non-Aryan means material consciousness. Now Krishna is the Supreme Personality of Godhead. इसके प्रमाण कई शास्त्रों में दिए गए हैं. मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ. उपनिषद में लिखा गया है कि कृष्ण इज द ओनली गॉड, द सुप्रीम, द वन एंड ओनली. मतलब ये इस्कॉन नहीं कह रहा, इस्कॉन के दिमाग की उपज नहीं है. इस्कॉन इज फॉलोइंग दीज शास्त्रस. ये शास्त्र कह रहे हैं. उपनिषद, वेद और पुराण तीनों कहते हैं दैट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू ही भगवान है. ऋग्वेद 1.156.2 में कहा गया है कृष्ण इज द सुप्रीम. कथा उपनिषद 1.3.9 में कहा गया है. नारायण उपनिषद 1 and 4 में कहा गया है. गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है. श्वेताश्वतर उपनिषद 5.6 में कहा गया है. एंड ब्रह्म संहिता 5.1 जो हमने अभी पढ़ा उसमें कहा गया है. एंड श्रीमद् भागवतम 1.3.28, 1.2.41, 1.2.11. इतने प्रमाण हैं शास्त्रों के that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So the next time you visit an ISKCON temple, don't think that ये हमारा ट्रेडमार्क है या हमने फैब्रिकेट किया है कलयुग में नई चीज. इनफैक्ट पुरानी चीज को उजागर किया है. ये पुरानी चीज थी, लुप्त हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई बाय सो मच ऑफ, पहले तो ऑफ कोर्स बाय पीपल from outside India and now from our own people. हमारे अपने ही लोग अपने ही कल्चर को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं by talking about secularism, which is a godless society. But Krishna consciousness can save the world. Krishna consciousness can unite all the religions. Krishna consciousness can हम सब ने सुना है ये वर्ड वसुदेव कुटुंबकम. पूरी दुनिया वसुदेव का कुटुंब है और इस पूरे कुटुंब का एक ही घर है जिसमें हम सब आपस में मिलजुल कर एक ही गोल को अपना लाइफ का गोल मानकर रह सकते हैं. So with that I finish
Any questions? You can unmute and ask. Yes, Samiksha, आप unmute करें. हाँ जी. I just you can hear me properly, na? Yes. I just want to ask, you said that कि भगवान इति level, it is the fastest, quickest and easiest way. How and what exactly we have to do for this? ओके सो आप तो मुझे भगवत गीता को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं. अभी तो हम सेकंड चैप्टर में ही है. बाय द टाइम यू रीच चैप्टर 18 इट विल बी ऑल क्लियर. Okay. द होल भगवत गीता इज अबाउट दिस ओनली. जो मैंने आपको अभी कहा कि एक लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी चैप्टर वाइज. टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट, एंड विद परफेक्ट लॉजिक. विद ईच चैप्टर आपको रीजंस मिलने शुरू हो जाएंगे व्हाई दैट इज द इजीएस्ट, द फास्टेस्ट एंड द ओनली. Currently, in the situation, the society, it's the only means. Harer naam, harer namayv, kevalam, kalau nastev, 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 gatir anyatha. Again, ये ISKCON ने नहीं बनाया है. This is already in the Shastra. Kalau, Kalyug में, nastev, nastev, nastev. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Gatir anyatha, no other way. 3 बार प्रमाण दिया है. This is the only way and the easiest way. Anything else? Vanita, I had a question. Yes, Actually, two. One is an observation. This is the first time, right, in text 2 that Krishna is talking. Yes. Okay. And he's being addressed as Shri Bhagavan. Shri Bhagavan. Yes. Okay. And the second one is, you were talking about the Brahmeti, Paramatmeti, and Bhagwaniti. Yes. So I'm a little bit confused. Is it like a sequential, or is it possible to just go to? It's sequential, right? So you have to. Sorry. Continue. Finish your question. So my question is it sequential so that you have to go through, the first 2 processes before you reach Bhagwan Iti? Or is it possible to just plunge into the third one, Bhagwan Iti, without going through? Because it is not like a foundation, right? First step, second step, and third step. Not at all. Not at Okay. all. We are in Kalyug. Time is Okay. of essence. Jump. Okay. Okay. Jump. It's an elevator. Leave Brahmeti and Paramatmeti. Okay. Okay. Got it. Thank you. Jump there. Yeah. Anything else? Anybody else? Then we'll say the closing prayers. वनीता, आपने भगवान विष्णु के 3 नाम बताए ना, गर्भोदय विष्णु, महोदय विष्णु, Mahavishnu, महाविष्णु, Garbhodakshai Vishnu, गर्भोदक्षाय. Dakshai, yes, Garbhodakshai Vishnu, Okay. and Kshirodakshai Vishnu. क्षीर सागर में जो सोए होते हैं, दूध के सागर में जो सोए हुए, क्षीर मतलब व्हाइट, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु. तो इसको आप अपने मन में एक चित्र बनाइए कि महाविष्णु लेटे. ये मातलोक नहीं था पहले, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहां पर कोई डेथ नहीं है, कोई ओल्ड एज और डिजीज नहीं है, सब इटर्नली खुशी से रह रहे हैं. लेकिन कुछ लोगों ने बगावत की, हमें कृष्ण का दास नहीं बनना, कृष्ण ही भगवान क्यों बनेगा, हमें भी भगवान बनना है. क्या समझता है अपने आप को, वो हम है. तो फिर कृष्ण इतने करुणामय, उन्होंने कहा अच्छा आप भी भगवान बनना चाहते हो, अच्छा मैं आपके लिए एक अलग से सृष्टि की रचना कर देता हूँ, वहां आप अपने भगवान बनना, अपने आप में अपने आप को ही राजा बनना और एंजॉय करना. तो उन्होंने ये एक मातलोक बनाया. दिस इज ओनली 1/4, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड, केवल 1/4 छोटा सा काला सा भाग है. वो बनाने के लिए पहले उन्होंने विष्णु को भेजा, क्योंकि वो तो कभी वृंदावन छोड़ते ही नहीं, एंड ही इज एंजॉयिंग, ही इज ऑलवेज enjoying playing with his gop. He is not bothered to do all these jobs. So उन्होंने अपने एक एक्सपांशन, विष्णु एक्सपांशन को भेज दिया, जाओ तुम ये करके आओ. तो महाविष्णु आए, लेटे कारण ओशन पे ब्लैक, और वहां पर लेटकर ही एक्सेल्ड. बहुत सारे उन्होंने ब्रह्मांड, ये प्लैनेट्स बनाए. तो दैट इज महाविष्णु का काम. उसके बाद when he glanced into all those planets, तो उन सब में वो सब प्रेग्नेंट हुई with life, all those planets. So when he entered each one of them, that is Garbhodakshai Vishnu, गर्भ में क्योंकि उसके गए तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए. क्षीरोदक्षाय विष्णु is the परमात्मा फीचर, ताकि वो सब में
he then personally went and entered each living entity. तभी वो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक सोल भी है, सुपर सोल भी है. वो सुपर सोल is the परमात्मा feature of the Lord. So all these three Vishnus. तो जब वो गर्भोदक्षाई महाविष्णु जब लेटे, उनके नाभि से जो फूल निकला, कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी एज इट इज फुल ग्रोन ब्रह्मा जी पैदा हुए. कोई बच्चे से बड़े नहीं हुए. फुल एडल्ट महाविष्णु produced a full adult just by from his navel. और ब्रह्मा जी ने डाइव किया, डीप डाइव. ही वाज द फर्स्ट डाइवर ऑफ दिस वर्ल्ड. ये डीप सी डाइवर्स क्या डाइविंग करेंगे. ब्रह्मा जी ने इतनी डाइविंग की उस समय कि कमल के फूल के जो स्टेम है उसमें डाइव कर करके मतलब करोड़ों साल लगा दिए. उनको समझ नहीं आया कि क्या है ये, हु इज माई क्रिएटर, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये जगह क्या है. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड. उसके बाद जब वो थक गए डाइविंग कर करके, उनको उस स्टेम का बेस ही नहीं मिला, लोटस का बेस ही नहीं मिला. ही कुड, जितना वो डीप जाते थे उतना वो और एक्सपैंड होता गया, डीप होता गया. ही कुड नेवर रीच महाविष्णु. देन जब वो बैठ गए मेडिटेशन में कि आई गिव अप, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ और मैं क्यों बना हूँ और मुझे करना क्या है. देन ही हर्ड द साउंड ऑफ अ फ्लूट in his ears and he heard two words, tap. So that was the indication he got कि मुझे तप करना है और उसी से मुझे information मिलेगी. And that is our message too, कि आप experimental process से, scientific analysis से जितना मर्जी deep sea diving कर लो, आपको भगवान की understanding नहीं मिलेगी, केवल श्रवणम से मिलेगी. श्रवणम कीर्तनम is the only way to get knowledge, not scientific analysis of matter. So जब उन्होंने तप किया, meditation की, then Krishna inspired his heart on how he gave him the entire engineering on how to create this world. Tene Brahma Hridaya Adi Kavai, the first verse of Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahma, I'm forgetting the starting, but तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, मतलब जन्मादि अन्वयादिया इतरतस. सो उन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ये सारी टेक्निकल इंजीनियरिंग डाली. सृष्टि को कैसे बनाना है, प्रजापति को कैसे बनाना है, 84 लाख योनियां कैसे बनानी है, ये सारी टेक्निकल नो हाउ उनके हृदय से उनको कृष्ण ने दी. दैट्स द वे टू गेट नॉलेज. Intelligence, knowledge, information will come from your heart, inspired from your heart, but only when you humbly and submissively sit in meditation on the Supreme Lord Shri Krishna, not on Brahma, Brahma Jyoti, not on void, not on anything else. That will not, I mean, you may try, you may or you may not get. But this is what Brahma did, who is our creator. It makes sense to follow what he is doing. So ये कहाँ से बात शुरू हुई? What was the question? I was trying to make a point here. मैंने वो विष्णु जी के नाम पूछे थे आपसे. Yeah. So these three Vishnus. So हाँ, तो ये महाविष्णु की नाभि से आए हैं ब्रह्मा. Thank you. Mahavishnu. So you can remember this. Mahavishnu, Nabhi, Brahma. So first is Mahavishnu. Then is गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु. गर्भ, जब वो हर प्लैनेट के गर्भ में चले गए, then गर्भोदक्षाय. Third is क्षीरोदक्षाय. Thank you. Three Vishnus. Okay, shall we say closing prayers? I think everybody. मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, रो रहा था इसलिए मैं पूछ नहीं पा रही थी. आपने ये जो एक तो रेफरेंसेस जो बताए ना, दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, प्लीज वो पोस्ट कर देना ग्रुप में. एंड सेकेंडली द आर्यन थिंग व्हिच यू डिस्कस्ड इन लेंथ, वो मैंने तुम्हारे लिए ही बोला था दोबारा से, बिकॉज़ यू वांट. वो मैंने सुन लिया, बट आप क्या उसका सोर्स को, इज देयर अ सोर्स फ्रॉम वेयर यू नो we have this information? Can you tell me? Yes, I'll send you plenty of sources. So Please, many. वो मेरे को चाहिए होगा. हाँ जी, I'll send you. ये था. Internet हुआ है. ठीक है, thank you. So much, there is so much speculation on Aryans and Aryan philosophy. Anyways, anything else? Yeah, I want to ask one thing.
दिस महाविष्णु एंड ऑल, इसका जो डिटेल हमेशा हम सुनते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा? इज इट इन द श्रीमद् भागवतम? मैंने आपको लिख लीजिए, श्रीमद् भागवतम 1.3.28, 1.2.11। 1.3.28, 1.2.11. So these are the two chapters and verses where we'll get this information about Mahavishnu. Okay, Yes. thank you. No, I think ये first canto में, हाँ first canto में ही है, creation. If you go to the first canto of Srimad Bhagavatam, first canto is all about creation. You will get all this information there. Okay. Starts only with creation. Anything else? So the verses will be same, right, Vanita? 1.2.11 and 1.3.28. वो तो same रहेंगे. These verses will tell you about the supremacy of Krishna. Okay. Anything else? Okay, shall we say? Just one thing, today in the lecture, Loknath Swami Maharaj was mentioning about the incarnations of Krishna, वो कृष्ण कथा में, तो उन्होंने एक incarnation का नाम बताया, which I have not heard. Is that the incarnation name or is it something else? I don't. Vrishna Garbha. As Vrishna Garbha, second time as Vaman Dev, and this time as Krishna. So Vrishna Garbha is the name of the incarnation of Krishna. Vrishni Garbh. Vrishni, yeah. That is Vrishni Garbh, ना? Vrishni dynasty में पैदा हुए. He is Vrishni Garbha also, क्योंकि वो जब द्वापर में आए थे तो वो वृष्णि डायनेस्टी में आए थे ना. In fact, chapter 1 में Arjun calls him also, no, that in one of the verses he calls him Vrishni. Yes. that तुम तो वृष्णि डायनेस्टी के हो, मुझे कह रहे हो कि अपनी डायनेस्टी को, कुरु डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दो. Okay. है ना? Okay. इसका रेफरेंस ना कृष्णा बुक में है, मैं आपको पेज नंबर भेज दूंगी, आप पढ़ लेना एक बार. आप ग्रुप पे ही डाल दो शीतल, because everybody ग्रुप में दे देना. पढ़ लेंगे. हाँ जी, हाँ जी. And next time, whenever we'll have class, just I want to know about Vishram Bhav, or Aishwarya Bhav. Exactly, what do we understand by Vishram Bhav, which he was mentioning in the morning today? Actually, Maharaj keeps repeating this quite often. Sorry? Maharaj keeps repeating it quite often, Vishram Bhav. I don't know. But is it a parental love of Nand and Yashoda he mentioned after that? I want to enjoy the Vishram Bhav, parental love of Nand and Yashoda. Is it the same or something else? And actually, what is Aishwarya Bhav? He explained, no, Aishwarya. In fact, good you asked this question. I think next class onwards, Janmashtami के बाद, once Janmashtami is over, I will have a lot of PPTs और ये हमको पहले कर लेनी चाहिए थी before we started the Bhagavad Gita. Introduction of the Bhagavad Gita के ऊपर कुछ बहुत important slides हैं और concepts हैं जो हमें ये 5 रसास and all these 5 bhavs के ऊपर हम detail में एक बार discussion कर लेंगे. So as we read further, it will become very easy for you. और ये introduction जरूरी है हमें करना, क्योंकि हमने introduction पढ़ी तो थी, लेकिन that was, उसमें काफी gap हो गया, and all many new people have joined, so उसमें ये सारी बातें cover हो जाएंगी. So I will do that. ठीक है ना मोनिका? Yeah. So all done? Okay. मोनिका आप रिपीट करेंगे मेरे बाद क्लोजिंग प्रेयर्स? ठीक है. ठीक है, बाकी सब म्यूट रखेंगे. एकम शास्त्रम, बाकी सब बोलेंगे लेकिन म्यूट करके. देवकी पुत्र गीतम, एको देवो, देवकी पुत्र एव,
एको मंत्रस एको मंत्रस तस्य नामानि यानि तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा तस्य देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरेन परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवं सुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचारु चाणूर चारुण चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान थे ना जिनको मारा था। कंस चाणूर वंश चारुण देवा कंस चाणूर मर्दनम वंश चारुण मर्दनम कंस 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 चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरु कात्यायनी महामाये कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः not getting पतिं मे पतन में कुरुते नमः कुरुते नमः श्री कृष्ण शरणं मम श्री शरणं मम दासोहं कृष्ण तवास्मि दासोहं कृष्ण तवास्मि तवास्मि together हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल जय जय श्री राधे।